Okay, friends. Now here we discuss another distribution called Dirichlet distribution. Some people pronounce it as Dirichlet and some Dirichlet, so you can pronounce it either way. तो k greater or equal to 2 अगर एक integer है and xi's are numbers in the interval 0 1 and such that summation xi is equal to 1, then the joint Dirichlet distribution of x1 x2 so on to xn, then these numbers are said to follow Dirichlet distribution अगर इनका joint PDF is given by 1 by beta of alpha sum product running from I goes from 1 to n gamma of alpha I divided by gamma of sum of alpha I. Okay, so मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये आप ऐसे भी लिखें वायर बीटा ऑफ एल्फा आपने लिखा बीटा ऑफ एल्फा। हमने कहा कि ये जो है x1 सॉन टू xn ये जो वेक्टर है वी विल रिगार्ड इट एज अ वेक्टर x1 सॉन टू xn। हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है अगर इसका पीडीएफ इज गिवन बाय दिस थिंग 1 बाय बीटा ऑफ एल्फा 1 बाई बीटा ऑफ एल्फा, सॉरी हमने यहाँ से ये गलत लिखा है, 1 बाई बीटा ऑफ एल्फा into product running from I goes from 1 to k xi power alpha I minus 1, where beta of alpha is given by product running from I goes from 1 to k gamma of alpha I divided by gamma of summation I goes from 1 to k alpha I. So this means ऊपर वाला जो है आपका gamma of alpha 1 है इंटू gamma of alpha 2 है इंटू so on gamma of alpha n है, फिर नीचे में क्या है, नीचे है आपका gamma of alpha 1 plus alpha 2 plus so on to alpha n, ये सब का gamma है। तो ये बीटा एक नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट है इसमें, तो ये चीज़ इंटू आप समेशन इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई पावर एल्फा आई माइनस 1, मतलब बीटा आई आपने देखा क्या है, बीटा आई ये है, बीटा आई है gamma of alpha 1 into gamma of alpha 2 into gamma of alpha n whole divided by gamma of sum of all these numbers। तो फाइन आपका जो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज गिवन बाय 1 minus 1 by beta of alpha summation I goes from 1 to k I power alpha I minus 1, so that's given by 1 by beta of alpha x1 power alpha 1 minus 1 into x2 power alpha 2 minus 1 and so on xn power alpha n minus 1। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है तो हम कहेंगे कि इसका जो है दिस फॉलोज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका जो मीन है दैट इज गिवन बाय जो इंडिविजुअल हैं इसमें ई ऑफ एक्स आई दैट इज गिवन बाय alpha I by summation alpha k goes from या k goes from, हाँ हमने यहाँ k लिखा क्योंकि यहाँ पे I है, k goes from 1 to k, ये small k है, ठीक है। so this is related to this gamma distribution। so you can recall कि जो gamma distribute है that is given by f of x equal to 1 by gamma of alpha beta power alpha x power alpha minus 1 e power minus x by beta when 0 less than x less than infinity, and this is 0 in all other cases। okay so you will also note g of ये gamma distribution this variable will set to follow the gamma distribution with parameters alpha and beta। so if you take alpha to be 1, if you take alpha to be 1 in this case, so what do you get,
this is denoted by G of alpha beta. I mean, what do you get for 1 beta? 1 beta is alpha 1 है 1 by beta e power minus x by beta. If you write 1 by beta as theta, so that is nothing but theta power minus theta x. ठीक है. So this is a particular case of this. In this way, gamma distribution becomes a particular case of exponential distribution becomes a particular case of gamma distribution. अब जो है जो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन है, हाउ दिस इज रिलेटेड टू दिस, उसमें जो एक्स आइज हैं, इफ एक्स आइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज alpha I beta and y is equal to summation xi, then जो इसका है, it has the distribution gamma of summation alpha I beta. Okay, so you can now रिकॉल कि हमने जो लिखा, हमने जो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, उसमें एक्स आई, उसको आप रिस्टेट कर सकते हैं ऐसे. एक तो हमने लिखा जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कई बुक्स में आप ऐसे भी लिखेंगे इसको कि एक्स आई जो है गैमा डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर्स अल्फा आई एंड बीटा, आई इज इक्वल टू 1 to up to k, and x1 so on to xk, they are independent. Then the joint PDF, see, मैं यहाँ से दोहराता हूँ. अब हमने कहा यहाँ कि एक अगर आपका वेक्टर है x1 so on to xn where each comes from 0 1, this is said to follow directly distribution if the distribution is given by this. लेकिन मसला है ये आया कहाँ से, इसलिए मैंने पहले ये गैमा जो है, इससे पहले ये गैमा मेंशन किया, एंड वी सॉ हाउ the exponential distribution becomes a particular case of this for beta for alpha equal to 1. Then if we have xi's are distributed as gamma variates with parameters alpha is and 1, मतलब इसमें इनमें सब के लिए बीटा जो है वो 1 है, और x1 x2 so on to xn xk, they are independent. And if we are interested in finding the joint PDF of x1 so on to xk, the joint PDF is given by, you can refer for the proof, you can refer to any book. So this is given by some product running from 1 to k, 1 by gamma of alpha I x power alpha I minus 1 e power minus xi. This is 0 in all other cases where y ये जो है I restated x i's जो हैं वो gamma variates हैं with parameters alpha and 1, and I goes from 1 to k, and x1 so on to xk are independent. Then the joint PDF of x1 so on to xk is given by I goes from 1 to k, 1 by gamma of alpha xi power alpha I minus 1 into e power minus xi. Okay, so this is how this directly distribution is stated in some books. So the notation goes like, when we say we have a vector x1 so on to xn following a directly distribution with parameters alpha 1 alpha 2, we will refer to it by saying this has the distribution alpha 1 alpha 2 alpha k. Okay, we will continue our discussion in the next class, wherein I will show you some visuals of the directly distribution and how it is related to other distributions.